Today we are doing exercise 5.3. This is question number 1. Match the following. So on the left side you can see type of angles are given, and on the right side statements are given, and we are required to match them according to the statements given, that which of the following will match on the other side, like straight angle, right angle, acute angle, obtuse angle and reflex angle. In the earlier we have studied that straight angle is of 180 degree, right angle is of 90 degree, acute angle between 0 and 90, obtuse angle between 90 and 180, and reflex angle between 180 and 360. Now match the following. Now we are matching. First of all, from the right statements we will match. It is given less than 1/4 of the revolution. Less than 1/4 of the revolution means revolution is of 360 degree और 1/4 क्या हो जाएगा उसका 90 डिग्री. तो ये जो 1/4 ऑफ द रेवोल्यूशन है उससे कम मीन्स 90 डिग्री से कम कौन सा होता है? एक्यूट एंगल. देन मोर देन हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन मीन्स हाफ मीन्स 180, क्योंकि फुल रेवोल्यूशन होता है 360 का, तो उसका हाफ क्या होगा? 180. तो 180 से ज़्यादा कौन सा होगा? रिफ्लेक्स एंगल. देन हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन मीन्स एग्जैक्टली 180 डिग्री, तो वो हो जाएगा स्ट्रेट एंगल. देन 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, 1/4 मीन्स 90 डिग्री, तो यहाँ पे राइट एंगल इससे मैच हो जाएगा. नाउ लास्ट वन इज ऑब्ट्यूस एंगल between 1/4 and 1/2 of a revolution, that is obtuse angle, and this will remain. So we will cut this. Only 5 will be answer of these questions. Now write these questions in your notebook and then solve them. Now this is question number 2. Classify each of the following as right, straight, acute, obtuse and reflex angles. So we have discussed about this. Acute, right, straight, ये सब हमें पता है कि कितने डिग्री से कितने डिग्री तक होते हैं. और अगर हम प्रोटेक्टर में देखें तो हम उनकी मेज़र को भी एक कंपैरिजन से, कंपेयर मीन्स इसको हम कर सकते हैं. नाउ वन बाई वन वी विल आंसर ऑल कि कौन सा जो गिवन एंगल है वो कौन से एंगल को बता रहा है. सो इन फर्स्ट वन यू कैन सी दिस इज लेस देन 1/4 ऑफ द रोटेशन. तो 1/4 से अगर कम होता है तो वो कौन सा होता है? एक्यूट. सो दिस इज एक्यूट. बी में देखें तो 1/4 से ये थोड़ा ज़्यादा है लेकिन हाफ से कम है, तो ये होगा ऑब्ट्यूस. In the C part you can see that is exactly 1/4, so it is right. Right angle. Angle I am not writing, you can write. Then in D part you can see it is more than 180 but not complete. Not complete rotation, that's why it is reflex. In E part you can see it is half of the rotation, so it is straight. Now here in the F part you can see two angles are given and both are acute because these are less than 1/4 of the revolution, so both are acute. So in this way you are required to draw them first and then write the type of angle.